Ladies and gentlemen, we request you to please rise. As we welcome our august dignitaries, as we embark on the final chapter of the 15th edition of Aero India. And now we request you all to please take your seats. We'd like to request everyone to please be inside the hall and please be seated. I'd like to once again request everyone to please be seated, and our friends from the media, our friends, our fraternity here, I'm going to request all of you to please align yourselves so that everybody is seated and everybody is able to witness this program, which is where we get to embark on a final chapter of the 15th edition of the Aero India. Now, in a short while, we'll have the august presence of the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, joining us. But before we move ahead, ladies and gentlemen, we also have the presence of the Chief of Defence Staff, General Anil Chauhan, Chief of the Naval Staff, Admiral Dinesh Kumar Tripathi, the Chief of the Army Staff, General Upendra Dwivedi, the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, and we are equally privileged to have the Defence Secretary, Shri Rajesh Kumar Singh, the Secretary Defence Production, Shri Sanjeev Kumar, and Dr. Manjula N., Secretary Infrastructure Development Department, Government of Karnataka. As we extend a warm welcome to all our dignitaries on the dais, I'd like to also once again request everyone to please be seated before we move forward with the program. Once again, I request each and every one of you to please be seated. Thank you. Ladies and gentlemen, we request all of you to please rise to welcome the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji. We also extend a warm welcome to the Honorable Minister of State for Defence, Shri Sanjay Seth Ji. And we also extend a warm welcome to all the dignitaries on the dais as we embark on the final chapter of the 15th edition of Aero India. Once again, we thank everyone for joining us on this momentous occasion. Ladies and gentlemen, this event consists of two significant parts. The Indigenization Event, Samarthya. This is where there is a display of few indigenized items, and of course, the valediction. So without any further ado, may I please invite Shri Sanjeev Kumar, the Secretary of Defence Production, to please deliver the welcome address. एरो इंडिया 2025 के वैलिडिक्शन फंक्शन में हमारी रिक्वेस्ट को मान देते हुए उपस्थित माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ,
Admiral D.K. Tripathi, General Upendra Dwivedi, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Defense Secretary R.K. Singh ji, Government of Karnataka की representative श्रीमती एन मंजुला, मेरे साथ इस भवन में उपस्थित मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन डीआरडीओ, डीजी एक्विजिशन श्री राहुल सिंह जी, मेरे कोलीग अमित सतीजा, डीपीएसयू के चेयरमैन, फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स, सब मित्रों, आज हम एरो शो 2025 के वैलिडिक्शन फंक्शन में उपस्थित हैं। I welcome you all to the valediction function. This event, which began 3 days ago, inaugurated by Honorable Raksha Mantri ji, witnessed unprecedented response, static display of the aircrafts of different type of aircraft moved from 23 to 34, and the biggest attraction of this air show, in fact, was the Su-57 and F-35. Number of exhibitors increased from almost 800 to 930, and the space which was utilized by exhibitors also increased from 35,000 to 42,000. We had opportunity to host honorable ministers, defense minister and deputy defense ministers from 26 countries and senior officials from more than 80-85 countries. On the first day after the inaugural, we had CEO's conference, which was chaired by Honorable Raksha Mantri ji. In fact, I would like to thank Honorable Raksha Mantri ji that he spent the entire duration of his afternoon on inaugural day with CEOs of various companies, foreign and indigenous Indian companies, in spite of his very heavy, busy schedule, with having large number of bilateral meetings with many ministers. So I express my deepest gratitude to Honorable Raksha Mantri ji. Also Honorable Rajya Raksha Mantri ji, who spent entire 3 days in encouraging us and having large number of bilaterals, which are important not only for the purpose of defense production, but also for the purpose of overall defense cooperation between two countries. Then yesterday we had Defense Ministers Conclave, which was attended by large number of ministers and head of delegations. Ministers, deputy ministers, and head of the delegations from more than 20 countries put their views, and it is gratifying to note that all of them endorse the policy of our government led by Honorable Prime Minister. They echoed the same sentiment of one earth, one family, one future, and peace and prosperity to all, and also expressed confidence in the capabilities of India as such in defense sector in particular. Then, sir, I would like to report that important events which took place apart from these two big exhibitions were large number of bilateral meetings in which Honorable Raksha Mantri ji, Honorable Rajya Raksha Mantri ji, CDS, all three chiefs, and Defense Secretary, me and also DG Acquisition had number of bilateral meetings with our counterparts and discussed issue of importance, mutual cooperation and mutual importance. And I am sure that these bilaterals would result in tangible outcomes. Uncountable number of meetings must have happened on the sidelines
between different industries, PSUs and private sector, their foreign partners, and I am sure that they would, in coming future, would fructify in tangible outcome which will be benefiting our defense industry. As such, either by way of increasing the capacity, indigenous capacity, or increasing the export to the friendly countries. We have seen the defense sector in the country has seen the massive transformation. Large number of items, sub-assembly, component level LRUs have been made open by our DPSUs and armed forces for the indigenization. Honorable Raksha Mantri, in one of the review meeting 3 months back, observed that though we have indigenized large number of components, but still those components, when are being sourced from the domestic industry, we should ensure that those domestic industry should also be indigenously manufacturing that. On that clue, we undertook that exercise, sir, with all our defense public sector units to scan all their suppliers, and I am happy to report that, sir, we are able to find another 35,000 components which can be indigenized, which we would be requesting you to release today so that they can be added into our indigenization list. Then we can say that we have reached to that level of indigenization. Sir, I am thankful to you in person, sir, in particularly for guiding us, for coping with us, sir. Many mistakes must have happened in last 3 days. So, for your benevolence in ignoring our mistakes. But I assure you, sir, me and my team, along with the entire MOD fraternity, would learn from those mistakes and would improve the next version of Aero India for us and also for the general public. At the end, sir, I would like to thank all the dignitaries present on the dais, all my friends from the defense forces, from DPSUs, from private sector, all the friends from Government of Karnataka, from friends from the media, and each and everybody who enabled us to put up this event. I will end my welcome speech by thanking the anchor also. She has been doing wonderfully well job for last 3 days. Thank you very much. Thank you very much, sir. Firstly, for your insightful words that have truly provided a valuable context as we move forward. And we also thank you, sir, for sharing across some pertinent data points that shows a growth trajectory as compared to the last edition and that of this edition. Can we also have a huge round of applause one more time, ladies and gentlemen, as we thank Shri Sanjeev Kumar for sharing those valuable words. Now, as we take that enthusiasm forward, we now are pleased to announce the launch of 3 significant publications. First up is the booklet of HQIDS on network-centric multi-domain operations. Now, this booklet offers insights into conducting multi-domain operations in a data-centric environment in the backdrop of emergence of new and transformative technology that is revolutionizing the nature of warfare. I'd like to humbly request the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, to please unveil this publication, the booklet of HQIDS on network-centric multi-domain operations, along with all the dignitaries. As we capture this moment, we now launch the publication, ladies and gentlemen, Compendium of Problem Definition Statement, that is CPDS of Indian Army 2025. Now declared as the year of reforms, this is a pivotal document that endeavors to bridge the gap between the operational challenges of Indian Army and the innovative indigenous solutions offered by the academia, industry, startups, and research institutions. Once again, I request all the dignitaries to please come together for the launch of this very significant publication before we move on to the next announcement of the launch as well. And finally, ladies and gentlemen, this is where we announce the launch of the coffee table booklet, Samarthya, on indigenization. This publication provides an overview of the indigenization journey led by the Department of Defense Production, detailing the import dependencies of defense DPSUs, success stories, and strategies to accelerate indigenization efforts. We can have a louder round of applause, ladies and gentlemen, for all the initiatives
and for these significant publications that are being launched officially here. And as we also thank the dedicated team behind these transformative initiatives, ladies and gentlemen, on that inspiring note, we now invite you all to please experience a short film that beautifully showcases India's indigenous ingenuity in defense manufacturing along with its many success stories. So let's have the video on the screen, please. Forged in resilience, driven by innovation, India's Samarthya is shaping a future of strength, strategy and self-reliance. India's not just marching ahead, it's taking giant strides towards self-reliance in defense manufacturing. The journey began in the 2014 with the Make in India initiative. In 2018, the Honorable Prime Minister launched IDEX to involve startups and MSMEs in defense innovation. In 2020, the Srijan portal was launched as opportunities for Make in India in defense. More than 38,000 defense items have been offered through Srijan for indigenization. And in 2021, the first positive indigenization list for DDP was notified, with 4 more lists notified till date. India has transformed its defense landscape, reducing import dependency and strengthening domestic production with massive contribution from 16 defense public sector undertakings, 430 plus licensed companies and 16,000 plus MSMEs. With a successful talent pool, India is advancing indigenous manufacturing like never before. India's defense companies are pushing the envelope when it comes to innovation with many trailblazing solutions like the engine and flight display unit used in Jaguar Darren 3, Suchi, the fuel cell electric boat, the fast petrol vessel and fast interceptor boats, the optical sending unit for T-90 tanks and starter generator for T-72 tanks, the collimator assembly used in Concourse missile and many more. Today, India proudly manufactures and exports to over 100 nations. In just 4 years, over 13,000 items from the Srijan portal have been indigenized, and defense companies have placed orders worth 7,500 crore rupees with domestic vendors. India's indigenization journey is accelerating and shaping a powerful future. India is preparing a world-class defense manufacturing ecosystem. Driven by engineering excellence, robust supply chains and MRO capabilities, India is now increasing its pace of production with a time-bound roadmap for indigenizing 34,000 plus critical items and offering them to the industry to increase indigenous content and to become partners for Atmanirbhar Bharat. With every innovation, every breakthrough, every partnership, India's flying high, stronger than ever. This is the journey of Atmanirbhar Samarthya. What an inspiring journey that we've just witnessed through the film. In fact, it's truly remarkable to see how far we have come and also explore the exciting opportunities that lie ahead. On that note, ladies and gentlemen, we now march ahead for the announcement for felicitation of indigenization awardees. We are now truly honored to recognize the outstanding contributions of our indigenization awardees from defense public sector undertakings, the Defense Research and Development Organization, the Indian Navy, and IDEX startups. Now, these individuals and teams have played pivotal roles in advancing indigenization within our defense sector, significantly enhancing our self-reliance and technological capabilities. We will be displaying the names of the indigenized items on the screen, while I will be requesting one representative from the team to please come forward along with their certificates. So first up, ladies and gentlemen, may I please invite the very first group of awardees to please come forward, and let's also showcase the names of the indigenized items on the screen. I'd like to please request our dignitaries, along with the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, to kindly step forward. If I could request all of you to please step forward. These awardees are from the organizations such as
All right, so let's first capture that photo up, and then let me also go ahead to announce that our very first set of awardees are from IOL, NDL, BEML, YIL, Midhani, HAL, AVNL IOL, DRDO, Gurutwa Systems Private Limited, as well as Astrom Technologies. Well, let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen. We thank you very much. Thank you indeed. I'd like to request our first group of awardees to please head back. And we thank you indeed. But with that, ladies and gentlemen, while I request our dignitaries to please remain, we'd now like to invite the second group of awardees to also please come forward. Meanwhile, we'll also be displaying the names of the indigenized items on the screen as I invite our second group of awardees. Our second group of awardees who come from the following organizations: QNew Labs Private Limited, Chipsprit Technologies, Saga Defense Engineering Private Limited, Seconize Technologies Private Limited, Crimson Energy Experts Private Limited, Vimal Fire Controls Private Limited, BEL, TSE Technologies, and DNAS and DRDO. May we continue with that round of applause, ladies and gentlemen, as we hear it for these awardees. As we thank our second group of awardees, we request our media personnel to please make way so that we can also invite our third group of awardees right here. If I could request our third group of awardees also to please come forward. Please note that the name of the indigenized items are displayed on the screen. And our third group of awardees that belong to DRDO and DNAS, BEL, GRSE, MIL, GIL, BDL, AWEIL, and IOL. Once again, we congratulate all the awardees and we thank you. We'd like to request all the awardees to please proceed towards your seats, and I request our dignitaries to please take your seats. Ladies and gentlemen, on that inspiring note, as we draw closer to the conclusion of this momentous event, it is my absolute honor to invite the Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji to please present the valedictory address and share his valuable insights into the promising future that lies ahead. रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, जनरल अनिल चौहान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल डीके त्रिपाठी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह चीफ ऑफ एयर स्टाफ, श्री राजेश कुमार सिंह डिफेंस सेक्रेटरी, श्री संजीव कुमार सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, डॉक्टर समीर वी कामत सेक्रेटरी DD R&D and Chairman DIDO, Dr. Yan Manjula, Secretary Infrastructure Development Government of Karnataka, सारे अन्य ऑफिशियल्स, भारत सरकार और कर्नाटक सरकार के, इंडस्ट्री पार्टनर्स, बिजनेस लीडर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों, 3 दिनों से चल रहे 15th ग्रैंड एरो इंडिया एग्जीबिशन के वैलिडिक्टरी फंक्शन में आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद प्रसन्नता है। विश्व के प्रमुख एयर शो में से एक एरो इंडिया आप सबके सहयोग से जिन ऊंचाइयों को छू रहा है वह अनपैरेलल्ड ही नहीं है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा वह हिस्टोरिक है। साथियों, मैं खुद पिछले 3 दिनों से इस इवेंट में यहां उपस्थित हूं। इन 3 दिनों में मैंने यहां पर आकर जो अनुभव किया है,
यदि उन अनुभवों को कुछ शब्दों में कहना चाहूं तो उसके लिए मेरे जेहन में केवल 3 शब्द हैं, और वह 3 शब्द हैं एनर्जी, एनर्जी और एनर्जी। यह लंका में जो कुछ भी हमें देखने को मिल रहा है वही एनर्जी का साक्षात एक मैनिफेस्टेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एनर्जी और इंथुजियाज्म ये सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर से आए पार्टिसिपेंट्स में भी पूरी तरह से दिखाई दिया है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे इनोवेटर्स में जो उत्साह मुझे दिखाई दिया है, मैं कहना चाहूंगा वह कमेंडेबल है। साथियों, इंडियन एयरफोर्स ने जिस प्रकार से एरोबेटिक परफॉर्मेंस की, उनमें एनर्जी का अलग ही लेवल आप सबको दिखाई दिया होगा। हमारे एयरक्राफ्ट द्वारा जो रेखाएं आसमान में बनाई गई, मैं उन्हें हमारी डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री के ब्राइट डेस्टिनी की रेखाओं के रूप में ही देखता हूं। और ये रेखाएं हमारी आंखों के सामने से भले ही ओझल हो गई हों, पर हमारे मन मस्तिष्क में ये रेखाएं सदैव अमिट रहेंगी। साथियों, आज हमारा देश ट्रांसफॉर्मेशन के एक रिवॉल्यूशनरी दौर से गुजर रहा है। प्रारंभ में ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भरता का जो मंत्र दिया था, उस मंत्र की जो एक अंडरलाइनिंग फिलॉसफी थी वह थी हॉलिस्टिक नेशनल एम्पावरमेंट। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है जो कुछ साल पहले तक हमारी नेशनल साइकी में कभी पनपा ही नहीं था। धीरे धीरे यह फिलॉसफी हमारी नेशनल स्पिरिट बनी और अब यह एक नेशनल रिजोल्यूशन और नेशनल रिवॉल्यूशन बनकर तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, जहां तक डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का प्रश्न है, तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जैसे इकोनॉमिक फैक्टर तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एम्पावरमेंट। और हम सब जानते हैं कि भारत ऐतिहासिक रूप से अपनी डिफेंस नीड्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर रहा है। लगभग एक दशक पहले की यदि मैं बात करूं तो 65 से 70% तक डिफेंस इक्विपमेंट हमारे देश में इंपोर्ट किए जा रहे थे। वहीं आज की स्थिति यदि देखी जाए तो इसे आप रिवॉल्यूशन कहें या फिर मिरेकल, परंतु लगभग इतने ही प्रतिशत डिफेंस इक्विपमेंट आज देश के अंदर बनाए जा रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आत्मनिर्भरता के कंटेक्स्ट में सिर्फ नंबर्स का ही उलटफेर नहीं हुआ है, बल्कि देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की पूरी तस्वीर ही पलट गई है। साथियों, आज हम ऐसे जंक्शन पर खड़े हैं जहां पर फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स, नेवल वेजल्स या फिर ऐसे अनेक इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म न केवल हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि वे पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। आज छोटी आर्टिलरी से लेकर ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तक हम दुनिया के अनेक देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे सिर्फ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ग्लोबल लेवल पर अलग अलग देशों के साथ हमारी नई नई पार्टनरशिप भी डेवलप हो रही है और साथ ही यह मजबूत भी हो रही है। साथियों, इस बदलती हुई तस्वीर के पीछे कई कारण रहे हैं, कई प्रयास भी रहे हैं, जिनको फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु एक बात तो स्पष्ट है और वह है हमारा फॉर्म रिजॉल्व और फॉर्म कन्विक्शन और आप सभी स्टेक होल्डर्स का हमारे ऊपर ट्रस्ट। ऐसे अवसर कम ही आते हैं जब इतने सारे स्टेक होल्डर्स एक स्थान पर इस प्रकार इकट्ठा हों तथा एक खुले वातावरण में पूरी फ्रैंकनेस और ओपननेस के साथ आगे बढ़ने का बस संकल्प लें। साथियों, आज हमारे पास एक सशक्त डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इसमें 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, 430 लाइसेंस्ड कंपनीज और लगभग 16,000 MSMEs इन्वॉल्व हैं। इसमें एक खास बात यह है
कि प्राइवेट सेक्टर टोटल डिफेंस प्रोडक्शन में वर्तमान में 21% की भागीदारी के साथ हमारे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। एक लंबे समय तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बहुत ही कम हुआ करती थी। ऐतिहासिक तौर पर इसके कई कारण भी रहे हैं। आमतौर पर बड़े डिफेंस प्रोडक्ट्स कैपिटल इंटेंसिव तो होते ही हैं, उनके निर्माण में एक लंबा समय भी लगता है। दूसरी ओर उन्हें इस बात की गारंटी नहीं मिल पाती थी कि इतने इन्वेस्टमेंट और टाइम लैग के बाद क्या फोर्सेस उन प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करेंगी या नहीं करेंगी। हमारी सरकार का शुरू से ही यह प्रयत्न रहा है कि इन अनसर्टेनिटीज को दूर करके प्राइवेट सेक्टर को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराया जाए, और हम लगातार ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जिससे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही आगे न बढ़े, बल्कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर आगे बढ़े। एक ओर तो हमने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में रिवीजन करते हुए 11 से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया है, तो दूसरी तरफ आईडेक्स, आईडीटी और टीडीएफ जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से हमने स्टार्टअप और इनोवेटर्स को फ्रंटियर और कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इंस्पायर भी किया है। ऐसे में मैं समझता हूं कि भारत में वह दौर आ गया है कि यहां प्राइवेट इंडस्ट्री डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नेतृत्व करें। साथियों, आत्मनिर्भरता के आंदोलन में आप सभी स्टेक होल्डर्स का सहयोग और भागीदारी ये पूरी तरह से स्पष्ट है ही, पर मैं समझता हूं कि इसमें जिनका सबसे बड़ा सहयोग और जिनकी सबसे बड़ी भागीदारी है वो हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस। बर्फीले पहाड़ों से तपते रेगिस्तान तक, आसमान की ऊंचाइयों से समुद्र की गहराइयों तक, बीहड़ जंगलों से लेकर भीषण नेचुरल डिजास्टर्स तक हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने पूरे देश को जो भरोसा और ताकत दिया है उसे शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है और इसमें किसी प्रकार की कंप्रोमाइज की गुंजाइश नहीं रहती है। नथिंग लेस देन द बेस्ट कैन बी अलाउड वेयर इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी। चाहे वो हमारे जांच सैनिकों के लिए साजो सामान हो या उनके और उनके परिजनों के लिए उचित सुख सुविधाओं का प्रोविजन हो, मैं समझता हूं कि हर चीज में उन्हें बेस्ट प्रोवाइड करना हमारी यह कोई सामान्य रेस्पॉन्सिबिलिटी, केवल व्यक्ति विशेष की किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि यह नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारी सेनाएं आज न केवल बेस्ट साजो सामान से इक्विप्ड हो रही हैं, बल्कि अपने ही देश की धरती पर निर्मित साजो सामान से इक्विप्ड हो रही हैं। इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड डिफेंस प्रोडक्ट्स के प्रति हमारी सेनाओं ने अपना पूरा भरोसा दिखाते हुए जिस देश प्रेम और देशभक्त का परिचय दिया है उसकी मैं सराहना करता हूं। हमारी सेनाओं ने देश में ही निर्मित हथियारों और युद्ध से जुड़े सभी प्रकार के साजो सामान को दिल से अपनाया है, स्वीकार किया है। साथियों, आत्मनिर्भरता की इस मुहिम को आज यदि हम इस लेवल तक अंजाम दे पाए हैं, आगे और भी तेजी से ले जाना चाहते हैं, तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारी आर्म्ड फोर्सेज के कंप्लीट सेटिस्फैक्शन से ही यह हासिल की जा सकेगी। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का जो विशाल हिमालय आज भारत में खड़ा हो रहा है, इसके आधार में इसके प्रति हमारी सभी सेनाओं का भरोसा और अटूट विश्वास ही है। साथियों, इस इवेंट ने यह पोटेंशियल दिखाया है कि इंडियन डिफेंस तथा एरोस्पेस सेक्टर का फ्यूचर हमारी स्काईज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह बियॉन्ड द स्काईज भी है। और हमारे देश की प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस बेहतर कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। हम स्पेस में भी किस तरह अपनी पहुंच इंश्योर कर रहे हैं, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके बीच यहां रखना चाहूंगा। आप देखिए, जैसे इसरो ये
रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहा है। डीआरडीओ ने भी कुछ वर्ष पहले ही एंटी सैटेलाइट यानी एसैट सिस्टम को इंडिजिनसली डेवलप किया है। इसके अलावा भारत जल्द ही गगनयान के माध्यम से मैन्ड मिशन भी स्पेस में भेजने वाला है। इसके लिए भी हमारी एयरफोर्स इसरो के साथ मिलकर काम कर रही है। मेरे कहने का अर्थ यह है साथियों कि आज वारफेयर के जो नए नए डायमेंशंस इमर्ज हो रहे हैं, हम उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमने एरोस्पेस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस ट्रांसफॉर्मेटिव एरा से हम सब गुजर रहे हैं, उस दौर में भारत अब डिफेंस इनोवेशन और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में न सिर्फ एक पार्टिसिपेंट बल्कि एक ग्लोबल लीडर बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। साथियों, एरो इंडिया 2025 का समापन हो रहा है, परंतु मैं समझता हूं कि एरो इंडिया जैसे एग्जीबिशंस का फिजिकली भले ही समापन हो जाए, लेकिन इसका इंपैक्ट कभी खत्म नहीं होता है। यह समारोह भले ही समाप्त हो रहा है, लेकिन यह जिस तरह से देश विदेश के पार्टिसिपेंट्स को एक साथ जोड़ रहा है, जिस तरह से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन को यह इंश्योर कर रहा है, जिस तरह से नई जनरेशंस को यह इंस्पायर कर रहा है, मुझे लगता है कि इसका इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। शानदार इनॉग्रल फंक्शन और मिनिस्ट्रियल इंटरैक्शन, दुनिया भर से आए कंपनीज के सीईओज के साथ विचार विमर्श, यह सभी महज एक इवेंट भर नहीं थे, बल्कि यह डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर को एक स्ट्रेंथन करने की दिशा में माइल स्टोन्स थे। मैं हमारे सभी विदेशी मेहमानों, सभी डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स, सेक्रेटरीज समेत 84 कंट्रीज के 500 से भी अधिक डेलीगेट्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एरो इंडिया के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला है। मैं 782 इंडियन समेत सभी 931 एग्जीबिटर्स और को एग्जीबिटर्स का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके पार्टिसिपेशन से इस इवेंट की सफलता इंश्योर हो सकी है। मुझे बताया गया है कि इस इवेंट में 58 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स सहित 115 ग्लोबल सीईओज ने पार्टिसिपेट किया है। यह निश्चित रूप से इस इवेंट के लिए एक गौरव की बात है और मैं समझता हूं कि अब तक का यह सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है। मैं कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से इतना विशाल आयोजन बेंगलुरु की धरती पर संभव हो सका है। मैं रक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी लोगों, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, हमारे सभी रत्न यानी हमारी सभी डीपीएसयू और खासकर महारत्न यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की इस ग्रैंड इवेंट के लिए सराहना करता हूं। मैं इस इवेंट के दौरान म्युनिसिपल ड्यूटीज में लगे कर्मियों, सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे कर्मियों, ट्रैफिक मैनेजमेंट और मेडिकल फैसिलिटी इंश्योर कर रहे अब सभी साथियों को अपनी ओर से विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। आप लोगों की दिन रात की मेहनत ने इस इवेंट को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं यहां की लोकल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को भी अपना विशेष धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि बेंगलुरु में हो रहे इस इवेंट को आप पूरी दुनिया में पहुंचाने और पहचान दिलाने की ताकत रखते हैं और मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि आपने इसे कर दिखाया है। इसके लिए आपका विशेष आभार। अंत में मैं बेंगलुरु समेत देश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को नई दिशा और नई गति देने के क्रम में इस आयोजन की संकल्पना हुई और यह लगातार सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता जा रहा है। मैं इस इवेंट को एक बिग सक्सेस बनाने के लिए एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं आप सभी को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए
अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। We thank you, sir, for your visionary words and leadership in shaping India's defense landscape. Well, taking that energy forward, ladies and gentlemen, as we come to the conclusion of the significant event, may I now please invite Dr. Manjula N., Secretary IDD, Government of Karnataka, to please propose the vote of thanks. Ellergu Namaskara, distinguished guests, esteemed participants and friends, as we come to the end of this incredible journey here at the 15th edition of Aero India 2025, the runway to a billion opportunities, it is my privilege to express our heartfelt gratitude to everyone who has made this event a resounding success. First and foremost, as a state nodal officer representing the Government of Karnataka, it is an honor to extend deepest thanks to the Government of India and the Government of Karnataka for their unwavering support in organizing and hosting this strategic event at Namma Bengaluru. A big thank you to our Honorable Chief Guest, Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Avare, Honorable Rajya Raksha Mantri Shri Sanjay Seth Avare, and all the dignitaries on the dais and officials for taking time to grace us with your presence and sharing your invaluable insights. Your presence inspired us and reaffirmed the importance of progress in the aviation and defense industries. Indeed, the State Government of Karnataka and Infrastructure Development Department, under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Siddaramaiah Ravaru, Honorable Deputy Chief Minister Shri D.K. Shivakumar Ravaru, Honorable Infrastructure Development and Industries Department Minister Shri M.B. Patil Avaru, made tireless efforts to ensure all the stakeholders collaborate seamlessly despite the state's flagship Global Investors Meet happening simultaneously at Namma Bengaluru. My heartfelt thanks to all the stakeholders, to name a few, Ministry of Defense and all the central PSUs, the Karnataka State Police, the Karnataka State Traffic Police, the Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike. Without the support and coordination of whom the event wouldn't be a success. To all the exhibitors, including industry giants, startups alike, thank you for showcasing your cutting-edge technologies and innovations. Your contributions are what make Aero India not just an exhibition, but a celebration of the future of aviation. It is your commitment to excellence that pushes the boundaries of what we can achieve. A special thank you to the media partners and the press for their continuous coverage and for ensuring that the world has been able to witness the scale of success of this event. We also extend our gratitude to all the organizers, volunteers, and support staff who have worked tirelessly behind the scenes to ensure everything ran smoothly. Your dedication, passion, and hard work have been key to making this event a truly unforgettable experience for everyone. Finally, to all the visitors from Namma Bengaluru, Namma Karnataka, from other states of our country, and also from countries across the globe, a big applause for making this event a grand success. Special mention is due to the aviation enthusiasts who came to witness this spectacle. Your enthusiasm and curiosity fueled the growth of the aviation industry. We hope that you leave this event inspired and excited about the future of aerospace. In closing, we look forward to the continued success and collaboration that Aero India fosters between nations, industries, and individuals. Together, we will continue to soar to new heights in the world of aviation. Thank you, and see you all at Aero India 2027, once again at Namma Bengaluru. Ellarigu ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Jai Hind, Jai Karnataka. Thank you. Thank you very much, ma'am, for those gracious words that truly encapsulated the essence of the event. On that note, as we officially conclude our event, I'd like to firstly please request all our guests to please be seated. And at this juncture, I please request the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, and the dignitaries to kindly proceed for the group photograph
that is just outside the Chandan Singh Hall. We thank you again for joining us this evening, but I'd like to please request our dignitaries on the dais to please proceed for the group photograph. Meanwhile, all the guests inside the hall, please continue being seated. It's a humble request to all the guests inside the hall to please be seated. In fact, 2 team members for each team have already been positioned for the group photograph outside the Chandan Singh Hall. And this is where we have requested the dignitaries to join the team members who have made significant contributions to the indigenization of the items that have been showcased in the Samarthya event display. So while our dignitaries are just outside for the group photograph, once again I please request all the other guests here to please be seated. Once again, I request all of you to please be seated as the Honorable Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh Ji, and the dignitaries are with the team members outside for the group photograph. So we'd request for all of you to please be seated.